Okay. So, very good morning, all. I welcome you all in today's expert lecture on design safety concepts of chemical process industry. Today, Mrs. Jayashree Deshpande Madam is with us as a guest expert lecture. I welcome you, Madam, on behalf of Chemical Engineering Department, GEC Bharuch. Now, I would like to request Professor Naina Madam to say a few words. Naina Madam. Yes, sir. Yes, Mangesh sir. Thank you, Mangesh sir. We welcome you, Madam. Jayashree Madam, we are very much thankful to you. We are highly obliged with your presence, Madam. Sunday है, फिर भी आपने time spend किया है for our students. We are very much thankful to you, Madam. और मैडम जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्टूडेंट्स सेफ्टी का सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, डिजाइन भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल डिजाइन एज वेल एज प्रोसेस डिजाइन. तो ये जो टॉपिक पे जो आप आज डिलीवर करेंगे, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू देम इन देयर करिकुलम. We welcome you, madam, in our department and as a expert speaker. Thank you very much, madam. Thank you, madam. Thank you, Naina ma'am. Yes. Okay. It gives me an immense pleasure and privilege to introduce our today's guest, Mrs. Jayashree Deshpande Madam. Madam is a HSC engineer at Black and Witch Private Limited Industry from Mumbai. Black and Witch Company is delivering the world-class solution in the area of power, gas, chemical processing, water and wastewater, sustainability and decarbonization solutions, including the green hydrogen and ammonia. Madam have more than 6 years of experience in various design HSC related activities, including the electrical hazards area classification, fire and gas detection, fireproofing. Also participated in various safety studies, including the hazard, QRA and SIL study. So now I would like to request ma'am, Jayashree ma'am, to take a charge of today's session and guide our students. Jayashree ma'am. Thank you so much, Mangesh. Thank you so much, Naina ma'am, for your kind words. And yeah, I would also like to thank the students to join on Sundays, because I know weekdays are quite busy and they are like quite exhausted into the weekdays. But still, if you are ready to learn something new on weekend, it's really a good and a positive thing for us also. It encourages us also to teach and to have more knowledge sharing with you. So thank you everybody for joining today's session. Okay, so I'll share my screen now and we can start with the session. Just let me know if my screen is visible to all of you. Yes, ma'am, it's visible. Okay, all right. So welcome on board everybody. Today we are having a guest lecture on the introduction topic of design process safety. I have purposely kept this word process because we all being chemical engineers, we all should be aware and must be aware about the process things which that happens around. And you already have some subjects which tells you, or which you like, you are there like the core subjects for you, which will guide you or take you through the different chemical the process background which actually happens in the industry. So today's topic, we were going to learn how design safety is implicable or is applicable into the industry. Because till date what we know is safety matlab hand gloves pehno, PPE pehno, extinguisher leke jao, bas ho gaya. No, safety is much more ahead than this.
and we are going to see the basics of it. Of course, in the 1 hour session, we cannot discuss everything in detail, but I am here to tell you the brief idea about what the things happens in the industry. uh One more thing is this, I do not want this to be a monologue jahan pe only I am talking and you are listening. I want everybody, I literally mean everybody on this call, to be attentive and to be interactive. If you found any single word which you are not getting or you are not understanding the meaning of, I want you to come up, raise your hand, will solve your query there and then. ये सेशन मुझे बोलने के लिए नहीं है, आपको समझने के लिए है. So make sure you are getting each and every term which is presented today, and you are learning it and you're like analyzing it. So if you have any query, please raise your hand and we'll discuss. Yeah, so we'll quickly go through the content which we are having today. So first we'll understand why we need safety in the industry. What is the importance? We'll see some introduction about it. So we'll be seeing some terms about it. Then what are the different activities which we do in the industry? If anybody of you wants to pursue the safety in their like as their career, then what expertise you required, like what qualification you want, then what are the career opportunities present, and for this what are various exams and certifications present, because most of the people are not aware about ki safety के लिए और भी कुछ qualification है. Like engineering में, as your ma'am rightly said, we have a topic on safety. We all together have a different stream which teaches you whole engineering on safety. So we have the government has launched a separate BTech and BE course in process safety, or it is not design safety, it is industrial safety. So similarly we have various other courses. So I want and like you to know what are the other options you can pursue. Yeah, so we'll start with the first one. What is the need of safety in the process and the chemical industry? So guys, आपको इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं सबको people are having idea about it कि आज यहाँ पे फायर आउटब्रेक होता है, वहां पे कोई गैस लीक होता है. So we all are aware about it, but we should develop that sense कि उसका जो consequence है ना, that is unrepairable. You cannot reverse the consequences which happens. So I just to spark a light upon what all the major accidents have happened in the industry, I've kept a name of very few. I'm saying literally very very few, but there are much more or many more accidents happening around. So few examples which you all are aware of is like the Bhopal gas tragedy which happened in India, then the Vizag gas leak which happened in the lockdown COVID period, which is like a very mass destructive accident. Then we heard about various fires which are happening in the dumping ground or in the factories, in the workshops. We have some recently we had a news about there are some storage tanks which got fire as of like all of a sudden, and because of that whole inventory has to be just the inventory just went off because it was all fire, and everything got burned. So that is again a production loss. Then there was one more huge incident happened in Piper Alpha refinery, which so Piper Alpha was supposed to be a very very large of a refinery, and that refinery all of a sudden it was an offshore refinery, means it was present inside the sea. Because of some manual error, the pump it was basically because of a maintenance error, a wrong pump was being installed, and the wrong fluid at the wrong time in a wrong safety manner passed on, and the whole of a refinery just vandalized in few seconds. Then the Chernobyl disaster, we all know about this. So guys, these are very few of the incidents, but major ones which happened around. So we, not because we are a safety engineer or something, we as a human being, we have this moral duty towards the society to avoid any of these accidents to happening. And so I believe safety is not only the responsibility of a safety engineer or a safety officer. You even being a process engineer, or you being a production engineer or manufacturing engineer, or anybody in the industry, I want everybody to have this sense of safety, because mistake कोई भी कर सकता है. अगर सब लोग safety के बारे में aware रहेंगे तो ऐसे accidents are preventable. So
everybody should be aware of the safety norms. Yeah. So after this, we'll be going towards the introduction introduction of this process safety. We'll be looking at some important terms which are present in the industry. Very first term is health. So guys, I want volunteers from you to tell me what do you know about health? आपकी definition क्या है health की? Anybody from second year, third year, first year, anybody, what have you heard about health? Yes, please. Please unmute yourself and speak. Yes, anybody? Abhay, Disha. Ma'am, health can be defined as the physical and mental quotient of a human being, Mm-hmm. and Okay. a healthy person would possess a certain sort of physical strength, as well as he should also be uh, mentally stable. He should not panic in different situations. Very correct. Very good terms or very good points he has raised here. Like not only physical fitness is important, but the mental fitness or mental condition is also a concern in health. So very good of a point he did. So if we go by the definition of health, so basically health should be an overall fitness. So it is defined as a complete physical, mental, and social well-being. So by social, I mean the environment in which the person is working, with the peers which he is working, that environment should also be healthy. By healthy, it means the person should not feel uncomfortable, or it should not feel difficulty into having a task done. So health is a state of complete physical, social, and mental well-being. If I go to the next term, safety, what does safety means to you guys? सेफ्टी सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है? पहली बात क्या दिमाग में आती है? Any thought that And you yeah, continue please. the prevention measures or precautions that we take Mm-hmm. uh, uh, to avoid or to prevent an accident. ओके, वेरी करेक्ट. तो आप जो प्रिवेंशन ले रहे हो या जो प्रिकॉशन ले रहे हो, उससे क्या होता है? एक्सीडेंट प्रिवेंट होता है. तो क्या मैं ऐसा बोलूं, इफ द एक्सीडेंट इज नॉट हैपनिंग, so the place which I am making, like what place which I am generating or creating is having minimal of risk. जो मैं सेफ्टी मेजर्स कर रही हूँ, सो मैंने एक्सटिंग्विशर लगा दिया, या मैंने जरा जो भी कंबस्टिबल है उनको बाजू में किया, इग्निशन सोर्स को बाजू में किया, जो भी चीजें मैंने कर रही हूँ वहां पे, आई एम डूइंग इट फॉर व्हाट सेक, आई एम डूइंग इट so that place should have minimum of risk. Is it correct? Yeah. So Yes, by yeah, so by safety, what I can say is safety is the absence of risk which causes serious physical injury or serious equipment damage or anything. So it should be absence of risk or minimal risk should be present. So by risk, what do you mean? Risk क्या होता है फिर? What do you understand by the term risk? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे. आप इवन आप बोलते भी रहेंगे आपके, नॉट फॉर एनी टेक्निकल रीजन, फॉर एनी जेनेरिक पर्सनल रीजन ऑल्सो, नहीं नहीं इसमें तो बहुत रिस्क है. तो व्हाट इज दैट रिस्क? basically it can cause harm. करेक्ट. सो एनीथिंग विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म. सी कभी कभी क्या होता है, उसमें पोटेंशियल है बट उससे कुछ हार्म होता नहीं है, कभी कभी होता है. सो एटलीस्ट जिसमें कुछ पोटेंशियल है हार्म करने का, तो ही वो चीज आगे हार्म करेगी भी नहीं करेगी भी, करेगी नहीं करेगी डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट. तो आपके सर के ऊपर जो सीलिंग फैन है, उसके अंदर पोटेंशियल है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने को,
बट वो करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गेटिंग फेल्ड. So that is what is risk is all about. So here we are not able to discuss in detail, but आपके पास अगर risk जो है तो इंडस्ट्री में उसको कैलकुलेट करने के लिए वेरियस सॉफ्टवेयर्स है, वेरियस स्टैंडर्ड्स है. So we can calculate the risk actually. So it is called quantitative risk assessment or risk analysis. So we have those things also. Yeah, we've seen about this. वेलफेयर से क्या समझ में आता है कि आप अगर कॉलेज में जा रहे हो तो आप कॉलेज में खाली जाके आ नहीं सकते हो. यू नीड टू हैव देयर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, you need to have their proper washrooms, you need to have proper benches to sit, proper study tables or whatever you want. If this you are referring to an industry, तो वहां पे इंडस्ट्री में अगर लोगों को काम करना है तो उनको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस में रखना है. दे शुड हैव प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग इक्विपमेंट, वर्किंग एक्सेसरीज. बिकॉज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज अगर उनके पास अच्छे वेलफेयर फैसिलिटीज ही नहीं होंगे ना, दे माइट नॉट वर्क सेफली. So for safety, this is a indirect definition, indirect important term in the industry. Yes, then comes hazard. What do you know about hazard? These are thoda related terms, but each term has its independent definition. So what hazard tells or signifies? And it can be said as a synonym of risk. It can all. It has all. It Mhm. also has the potential of causing harm Perfect. to mankind, to humans, equipment, etc. करेक्ट करेक्ट. तो अगर मैं आपको अभी बताऊं कि आप जो अभी सब लोग यहाँ पे मीटिंग ज्वाइन किए हैं, मे बी यू हैव ज्वाइन फ्रॉम योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर और योर मोबाइल फोन, तो दोज आर ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. तो वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्या हैजार्ड है? आर दोज एन हैजार्ड? Unmute and say either yes or no. 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 Okay. Anything? Any other option? Any other answer? Yes. Unmute quickly. In within 30 seconds, I want yes, yes, no, no, yes, ka mixture. Everybody, quick. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. नो वाले नहीं है कोई भी. एवरीबडी फील्स जो कंप्यूटर और फोन है वो रिस्क, वो हजार्ड है. यस यस, चलो चलो. नो वाले No, कौन है? no, यस ma'am. वाले कौन? नो. ओके देन जिसने यस बोला सब अपने फोन उठा के फेंक दो अभी. हजार्ड है उसमें, राइट? कौन कौन है यस वाले? आई वॉन्ट एनीबडी from the yes group to please unmute and explain why do you feel that phone or a mobile or a electronic gadget which you are using as of now is a hazard. Anybody of you please? See, मैम ये कई अगर बार आप वो ज्यादा यूज करने से फट भी सकता है ना. करेक्ट, फट सकता है मतलब क्या हो सकता है? बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो फट सकती है. तो बैटरी आपका एक्सप्लोड होती है. क्यों एक्सप्लोड होती है आपकी बैटरी फोन की? थोड़ा टेक्निकल में जा रही हूँ बट आई जस्ट वांट द लिटरल मीनिंग आउट ऑफ इट. क्यों एक्सप्लोड होती है बैटरी? पुरानी हो गई है, ओवरचार्ज हो गई है, कुछ फॉल्ट हो गया है, वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रहा है, एनी रीजन कैन बी देयर. बट सो ये हो सकता है, भले लाखों में से एक फोन का हो. Whatever it is, we are worst bothered about how many phones can be exploded. Is there a chance of that getting exploded? Yes. आप अभी फोन को, अभी सपोज अभी जैसे मैं एग्जांपल, मैं अभी मेरे लैपटॉप को चार्जिंग वायर से कनेक्ट करके आई एम टॉकिंग टू यू. So that charging plug has the potential to give you an electric shock if not handled well. Correct? That mobile phone which you are holding as of now, if you're not holding it in a proper way, it can give you ergonomical hazard. एर्गोनॉमिक हैजर्ड मतलब क्या? आपका पोस्चर गलत है, आपका नेक पेन हो सकता है, आपकी बैक पेन हो सकती है. एनीथिंग कैन हैपन टू यू.
इसका मतलब होगा या नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. Is it possible? Is it has a potential? Yes. So anything which has a potential to cause you harm is a hazard. एंड जैसे अभी मुझे किसी ने बोला, सॉरी अनफॉर्चुनेटली ना मुझे स्क्रीन की वजह से हु इज स्पीकिंग उसका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, बट द पर्सन हु जस्ट सेड कि रिस्क एंड हैजर्ड आर सिनोनिम्स, आई वुड से लाइक जो आपने एनालिसिस किया है वो बहुत करेक्ट, एंड आई वुड अप्रिशिएट एन एनालिसिस, बिकॉज रिस्क का और हैजर्ड का जब मैंने डेफिनेशन बोला वो ऑलमोस्ट सेम है. आई वुड जस्ट हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन देम. सो रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन of your likelihood and your probability and your severity. रिस्क ना एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, मतलब उस चीज ने आपको हानि पहुंचाने का कितना लेवल है. लाइक आपका भी मोबाइल फोन आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता है. अगर आपके हाथ में H2SO4 दे दिया किसी ने, तो ऑब्वियसली H2SO4 इज मोर हैजार्डस देन योर फोन, तो दैट हैज मोर ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस टू इट. एंड उसका प्रोबेबिलिटी भी देखते हैं. प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, उसका लाइकलीहुड क्या है आपको नुकसान पहुंचाने का. से एग्जांपल आपने H2SO4 को एकदम सील्ड जार में रखा जिससे उसको एस्केप होने का कोई स्कोप ही नहीं है, देन इट्स अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो बाहर आएगा. उसके ऑपोजिट अगर आपने उसको ओपन फ्लास्क में रख दिया, उसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बाहर आने का. सो रिस्क ज्यादा किस में है, ओपन जार में रिस्क ज्यादा है, क्लोज्ड में रिस्क कम है. तो आप देखोगे ना उसमें रिस्क कम ज्यादा बोल रहे हैं हम. तो रिस्क इज बेसिकली अ कैलकुलेटिव वैल्यू व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द कॉन्सिक्वेंस एंड द लाइक्लीहुड. एंड हैजार्ड इज जस्ट अ पोटेंशियल, उसको कितना है लेना देना नहीं है. उसको खाली क्या है भाई, कर सकता है या नहीं, कितना करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है. आर यू गेटिंग एवरीबडी? समझ में आ रहा है ये चीज क्या हो रहा है? Yes, ma'am. Yes. Thank you. Yes, ma'am. Yeah, sure. So we'll continue to the next term, which is incident. Okay, so I would say these are two more words. So I want the three terms to be done together. One is incident, one is accident, and one is near miss. चलो शुरू से शुरू करते हैं. Incident, इसे आपको क्या समझ में आता है? What do you know about this term? किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया हम बोलते हैं, तो क्या होता है ये टर्म इंसिडेंट? मैम ऐसा एक्शन जो प्लान भी हो, अनप्लान भी हो, कि कुछ हो जाए. करेक्ट, वेरी करेक्ट. इधर प्लान और अनप्लान, बट क्या है ये प्लान अनप्लान क्या है? लाइक व्हाट इज द थिंग? प्लान ट्रिप है या प्लान वेकेशन है या प्लान बर्थडे है, क्या है? So basically anything planned or unplanned which can cause an injury to somebody, and that somebody can be anybody. So आपको आपकी वजह से कोई दूसरे को तीसरे को किसी को भी अगर वो इंजरी कर रहा है वो चीज, तो that particular event, so these three terms are for that event, so that event can be called as incident. Oh, I'm sorry. So that thing is called an incident. So basically incident can cause or cannot cause, like it may cause or it may not cause a injury to a person or to a human or like a person or to that equipment or to anything, which if it is confirmed then उसको एक टर्म बोलते हैं, और अगर उसका नहीं होता है तो उसको एक टर्म बोलते हैं. जैसे कि अगर कोई इवेंट में किसी को चोट पहुंचती है तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया. Suppose a car dashes into some tree or some divider or whatever, then that event is called an accident. However, if that car, जो ड्राइवर था उसको कंट्रोल तो निकल गया था, बट somehow ना वो कार मैनेज हो गया, वो निकल गई, वो कार को डैश नहीं हुई, देन उसको बोलते हैं नियर मिस. तो नियर मिस इज व्हाट, इट हैड द पोटेंशियल. अगर थोड़ा भी इधर उधर होता ना तो वो कार का एक्सीडेंट ही होना था, बट somehow वो कार निकल गई. That event is called a near miss. So your incident can be a accident or it can be a near miss, जिसमें potential तो है
एक्सीडेंट या उसमें पोटेंशियल तो है चोट पहुंचाने का, तो पोटेंशियल के बाद अगर वो हानि पहुंचाता है तो वो एक्सीडेंट है। अगर नहीं, मतलब सी पोटेंशियल तो था, कुछ हो सकता तो था, बट अगर बाय समहाउ सम रीजन इट डिडंट हैपेंड, दैट दैट इवेंट इज कॉल्ड नियर मिस। तो इंडस्ट्री में नियर मिस रिपोर्ट करना इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि सी नियर मिस हो गया मतलब क्या, गलती तो था, अगर कुछ और भी गलत होता तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता था। तो इफ यू रिपोर्ट ऑल सच नियर मिसेस, तो आपके फ्यूचर में जो एक्सीडेंट्स है ना वो आपकी प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है। So guys, any industry there are only two major safety concerns. अब बाकी कुछ भी नहीं देखना है आपको, ओनली दो चीजों को ध्यान रखना है। वन इज अ फायर आउटब्रेक, सेकंड इज अ गैस रिलीज। सी मैं दो चीजें इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे डिजाइन सेफ्टी की बात कर रही हूँ। आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का जो आता है ना टर्म, उसमें आपका सब आता है। उसमें आपको फॉल फ्रॉम हाइट होगा, लाइक कोई ऊंचाई पे है तो उसको फॉल अरेस्ट दे दो, कोई केमिकल के पास काम कर रहा है तो उसको पीपीई दे दो। ये सब ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में आता है। ऑक्यूपेशनल मींस ऑन फील्ड सेफ्टी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन सेफ्टी, मींस एक प्लांट खड़े होने के पहले उसमें डिजाइन एस्पेक्ट्स आपको क्या क्या देखने और क्या क्या करना है, दोज एंड ऑल थिंग्स वी हैव टू सी हियर। तो टू थिंग्स वी हैव टू टेक केयर, फायर एंड गैस। फायर होगा मतलब फायर का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, इट कैन कॉज अ फेटेलिटी। Fatality means somebody can lose his life, and it can cause damage to property. Of course, any equipment fire पे है या कोई दूसरे equipment के flame की वजह से दूसरा equipment को supports को problem हो गया, वो गिर गया, तो property damage हो सकता है। सेकेंड इज गैस रिलीज। तो कोई अगर टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस अगर रिलीज होता है, टॉक्सिक गैस रिलीज होगा तो आपको हेल्थ हैजार्ड करेगा, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। और अगर आपका कोई फ्लेमेबल गैस है तो अगेन वो फ्लेमेबल गैस बाहर आएगा, फायर हो जाएगा। सो दीज आर टू मेजर सेफ्टी कंसर्न वी हैव टू लुक फॉर। So the first one which we are seeing is the fire outbreak. Before I moving towards the definition, you being chemical engineers, I want you to tell me what causes a fire to happen. Like आपने या आपने आपके सेफ्टी के टॉपिक में भी आपने पढ़ा होगा कि फायर होने का रीजन क्या है और होता कैसा है। प्लीज गो अहेड गाइस। आपको बता देती हूँ, फायर इज नथिंग बट अ सिंपल केमिकल रिएक्शन, बट आई वांट यू टू टेल मी कि ये कैसे होगा, क्या होगा रिएक्शन। मैम जैसे कि कोई पाइप है जिसके अंदर फ्लेमेबल फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इन केस अगर मेंटेनेंस सही से नहीं किया गया और फ्लूइड लीक हुआ और अगर वो हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में हुआ तो फ्लेम लग सकता है। और सिर्फ छोटे से फ्लेम से बड़ा फ्लेम बनने में टाइम नहीं लगेगा केमिकल इंडस्ट्री में, सिंस हर जगह। करेक्ट। सो आपने अभी यहाँ पे बोला कि उसके लिए मुझे एक पहले फ्यूल लगेगा और उसको इग्निशन करने के लिए कुछ तो लगेगा। तो फायर होने के लिए आई वांट सम फ्लूइड जो फायर कैच करने वाला, तो दैट्स फ्यूल आई वांट। सेकेंड थिंग आपने बोला कि उसके आपको इग्निशन कुछ इग्निशन सोर्स मिल गया तो मुझे इग्निशन सोर्स लगेगा, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में जैसे छोटे फायर से बड़ी फायर होने के लिए टाइम नहीं लगता है, इट्स वेरी करेक्ट बिकॉज देयर इज टन्स एंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फ्लेमेबल्स प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री। बट और भी कुछ लगेगा क्या फायर के लिए? Yes, ma'am. Oxygen. Very correct. So you would also require oxygen to for the fire to catch. So by definition, simply fire is a combustion reaction which, so combustion reaction के products तो आपको पता है, it will always give you CO2 and H2O. Correct? हमने ये अपने lower 10th standard से पढ़ते आए हैं combustion reaction का. Along with that, it gives you huge amount of heat and light. So to be very clear in the reaction, it's any fuel which is more or less hydrocarbon gives, like when it comes with the contact of oxygen or oxygen comes in contact with that fuel, you'll get heat and light along with CO2 and H2 as a byproduct. Okay. तो इस केस इस रिएक्शन में आपकी जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फायर के लिए लगती है वो है आपका फ्यूल, करेक्ट। सेकेंड थिंग है आपका इग्निशन सोर्स जो आपको स्पार्क देगा, जो आपको हीट देगा। एंड थर्ड थिंग इज योर ऑक्सीजन, बिकॉज फायर इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसके ऑक्सीजन या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको होना इंपॉर्टेंट है। ओके।
सेकेंड इज योर गैस रीलीज और गैस लीक और गैस रिलीज। तो आपके दो तरह के गैस होते हैं यहाँ पे। तो वन इज आपका टॉक्सिक गैस, जैसे हमने अभी बोला, उससे आपको हेल्थ हैजार्ड होगा। सेकेंड इज आपका फ्लेमेबल गैस या कंबस्टिबल गैस, जो अगेन हाइड्रोकार्बन गैस रहेगा, तो अगेन वो फायर कैच करेगा। तीन रीजन है आपके फायर होने का, गैस रिलीज होने के। अगर आपका कोई भी हैवी इक्विपमेंट, रोटेटिंग इक्विपमेंट है जिसमें आपका हैवी गैस फ्लो हो रहा है, तो कहीं पे उससे लीक हो जाता है, तो यू कैन हैव अ गैस लीक। या कोई प्रेशराइज्ड इक्विपमेंट है, जैसे आपका प्रेशराइज सिलेंडर है, तो वो भी आपका लीक हो सकता है। गाइस पता है आपके घर में अभी आई डोंट नो इफ सबके घर में है या नहीं, बिकॉज नाउ टेक्नोलॉजी की वजह से वी हैव दैट पाइप गैस। अदरवाइज अपने घर पे पहले सिलेंडर्स हुआ करते थे। वो सिलेंडर्स आर अ लाइव बॉम्ब इन योर होम, एट योर होम, बिकॉज वो प्रेशराइज इक्विपमेंट है। कहीं से भी माइनर लीक हो जाता है ना गाइस, आपका पूरा some acres of your land can have that consequences, can face that consequences. Of course, with the new technology we have utmost safety measures, which doesn't allow for that leakage. But yes, that cylinder is a hazard. उसमें potential है, हाँ है, consequences है, but उसका probability बहुत कम है, इसलिए risk भी automatically आपका कम हो जाता है। Okay. And some fugitive emissions, of course fugitive emissions भी it's similar kind of emissions। ऐसा उसको imagine करो कि आपके साइकिल का टायर है, अगर उसको कहीं पे, और वो धूप में है, उसमें हवा बहुत भर गया है, उसको आपने कहीं पे से फोड़ दिया, तो हाउ, लेकिन ना झटके से उसका एयर उससे से निकल जाएगा। Such kind of things are called fugitive emissions, like because of a minor leak, the pressurized equipment फटाक से it releases the inner content। Okay. Yes. Now moving to the core of this subject, which is activities जो actual industry में होती है. I will try to explain them. I know they are new for you, but at least मार्क दोज वर्ड्स, आपको माइंड में रजिस्टर करके रखो कि वो क्या क्या चीजें। एटलीस्ट आप अगर माई इंटेंट इज इफ यू आर गोइंग इन एन इंटरव्यू वेर इन इफ यू आर हैविंग और एनी, लेकिन देयर इज एन ओपनिंग फॉर अ सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी पोस्ट, आपको ये टर्म्स का मतलब समझ में मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेशर्स है, आपको ये इनके इंफॉर्मेशन होना इज नॉट एक्सपेक्टेड, बट एटलीस्ट यू शुड नो the names of it and वो एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन। लाइक चलो किसी ने आपको बोल दिया हैजॉप, तो आपको हैजॉप के बारे में 2 मिनट का उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। दैट इज माय इंटेंट फॉर दिस टुडेज सेशन। Okay, so the various safety activities that we do will go from the beginning। जो प्रोजेक्ट डिजाइन फेज में होता है उसकी शुरू से चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू में उसमें होते हैं ये 3 एक्टिविटीज, जिसको नाम है हैजिड, एनविड एंड हैजान। तो व्हाट इज हैजिड? हैजिड इज hazard identification, NVID is environmental hazard identification, and hazard is hazard analysis। All these 3 activities are done at a very preliminary stage of the project, जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट में शुरुआत में खाली एक लैंड होता है और एक लाइसेंसर का डिजाइन होता है कि भाई मुझे यहाँ पे एक रबर इंडस्ट्री डालनी है, या मुझे यहाँ पे एक ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री डालनी है, तो मुझे उसके लिए क्या क्या चीजें लगेगा, उसकी क्या क्या इक्विपमेंट है, तो उस इक्विपमेंट में क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, is a basic study। So this studies takes into account all the basic risk, कंस्ट्रक्शन रिस्क है, या उसमें और कोई भी आपका फ्लो रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, those are taken care in this। environmental risk of course। So just to update you, the current government of India has launched a new rule, or I would say a law, which explicitly asks the employer to have at least 33% plantation in the plant। अगर आपका से 100 मीटर का, अगर आपका एरिया 100 मीटर स्क्वायर का आपका एरिया है, तो उसमें से 33 मीटर स्क्वायर का आपको कंपल्सरीली पेड़ या प्लांटेशन करना ही करना है। is a new rule being placed because of this industry, like there are a lot of trees or plants being cut down। so ऐसा रहेगा तो how we can sustain, and also this industry let their water in the normal river water, तो उस पे भी bans है। so all such environmental identification we have to do। then comes your HAZOP। HAZOP is hazard and operability study, which is a very detailed and in-depth study। इसमें क्या होता है, आपका एक पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है, उसके एक एक बारीक से बारीक चीज को स्टडी किया जाता है।
एक एक वाल्व से लेके एक एक रिड्यूसर से लेके एक एक लाइन स्टडी किया जाता है और उसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है. So basically it's a brainstorming session means it's a meeting of say relevant people. So उसमें आपका प्रोसेस इंजीनियर रहेगा, सेफ्टी इंजीनियर रहेगा, प्रोडक्शन वाला बंदा रहेगा, लाइसेंसर रहेगा, पीएमसी रहेगा, क्लाइंट रहेगा. वो आपको ना एक एक चीजों में क्या गलत हो सकता है उस पे ये विल डिस्कस कि अच्छा मेरे ऑपरेटर ने ये वाल्व गलती से बंद कर दिया तो क्या होगा, या ये वाल्व का अगर मेरा कुछ ऑपरेशन गड़बड़ हो गया, ज्यादा फ्लो गया तो क्या होगा, कम फ्लो गया तो क्या होगा, एवरीथिंग. सो दिस इज अ वेरी टेक्निकल डिस्कशन व्हिच हैपेंस एंड इट इसका जो आउटपुट है इट टेक्स केयर कि कोई भी अगर गलत चीज हो गया तो यू हैव सफिशिएंट सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एनी कॉन्सिक्वेंस टू हैपन. Okay. Please guide if you're not getting anything. आपको कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है terms में, unmute and speak. I'm just continuing with the definitions. Okay. Then comes the terms SIL, S-I-L and L-O-P-A. These are a bit higher level study, जिसका नाम है Safety Integrity Level, and LOPA is Layers of Protection Analysis, जिसमें आपकी एक एक layers को study किया जाता है. कि suppose example अभी किसी ऑपरेटर का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भाई पहले अलार्म बजना चाहिए. चलो अलार्म बजने के बाद क्या होगा, तो भी प्रोसेस शटडाउन होना चाहिए. चलो शटडाउन भी हो गया, फिर भी रिस्क है, तो फिर क्या, तो भाई चलो मुझे डीसीएस में उसका अलार्म वगैरह जाके मुझे एक बैकअप कुछ ऑन करना है, या मुझे कोई फायर फाइटिंग कुछ पानी वहां पे स्प्रे होना चाहिए. वॉट एवर आर द मेजर्स, दोज लेयर्स आर बीइंग स्टडीड सिस्टमेटिकली. देन क्यूआरए और हीरा, जैसे मैंने अभी आपको बोला रिस्क कैलकुलेट करने के लिए जरा वेरियस स्टडीज, उसमें से वन ऑफ द स्टडी इज क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, या जिसको ऑक्यूपेशनल में बोलते हैं हीरा, जिसका नाम है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस. तो ये जो चीजें हैं दीज आर बिट अगेन क्वांटिटेटिव है, तो इसके लिए कुछ आपको नंबर्स लगेंगे एंड वो नंबर्स आपको आपके जो बेसिक जो क्या बोलेंगे जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स है उसमें से विल गेट द नंबर्स. सो उसमें ना हर एक इंडस्ट्री में अब तक जो एक्सीडेंट्स हुए उसका डेटा लेके दे एनालाइज एंड दे गिव यू कि भाई ये अगर प्रोसेस प्रेशर वेसल है तो इसका इतना इतना चांसेस है लीक होने का, इतना इतना इसको सेफ्टी मेजर लगेगा एंड सो ऑन. सो दोज डेटा दे गिव. Then the most important thing which happens is your audit. तो अब भाई आपके प्लांट में 100 इंजीनियर है, इतने वर्कर है, वो सब है, सबको एक साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको दे हैव टू बी कनेक्टिंग लिंक. आपको लगा नहीं यहाँ पे 4 एक्सटिंग्विशर लगा दो, किसी और को लगा नहीं 10 लगा दो, किसी को लगा भाई इतना, नो ऐसा नहीं होता है. सेफ्टी में छोटी हर एक छोटे छोटे चीज के लिए देयर आर सम स्टैंडर्ड्स, देयर आर सम रेफरेंसेस. सो उसको बेसिस लेके क्या आपने करेक्ट सेफ्टी इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, वो चेक करने के लिए वी हैव वेरियस ऑडिट्स इन इंडस्ट्री. करेक्ट. सो दोज एंड ऑल आर द सेफ्टी स्टडीज विच वी सीन कि वो स्टडीज है, मतलब उसमें आपको एक बेसिक चीज लेके आपको उसको स्टडी करना है. सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. Now what we are going to study is the design process safety activities, like actual में आपको डिजाइन में क्या चीजें करनी है. तो very first it starts with the analysis of dangerous properties of substances. आपको पहले जाके आपको प्लांट को देखना है और उसमें क्या क्या हैजार्डस चीजें आप लेते हो, क्या मैन्युफैक्चर करते हो. तो उसका रॉ प्रोडक्ट से लेके इंटरमीडिएट से लेके आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, उसके कैटलिस्ट क्या यूज होती है, उसके लिए कोई आप सपोज कभी कभी देयर इज सम स्टैग्नेंट वाटर, तो उसके लिए हम कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी रोकने के लिए यूज सम इनहिबिटर्स, तो वो इनहिबिटर्स भी कोरोसिव हो सकते हैं. सो एवरी माइन्यूट केमिकल जो आपके प्लांट में है वी हैव टू स्टडी एंड एनालाइज. उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया कि चलो अभी यहाँ पे मेरा फ्लेमेबल्स तो हैंडल हो रहे हैं, सो आई वुड रिक्वायर सम फायर फाइटिंग मेजर्स. तो व्हाट आर द वेरियस थिंग्स वी हैव टू डू फॉर द फायर फाइटिंग एक्टिविटीज. सबसे पहला, आपके पूरे प्लांट के अराउंड आपको एक फायर वाटर नेटवर्क ड्रॉ करना है. अगर आप कोई इंडस्ट्री विजिट में गए होंगे आपको दिखेगा देयर इज अ बिग रेड पाइप फ्लोइंग लाइक ऑल अराउंड योर प्लांट, और उसमें आपकी कुछ कुछ रेड कलर के इक्विपमेंट भी रहेंगे. So these red pipes are typically they're used for the fire water to be spread throughout the plant. वो आपको on like readily water available कर देंगे. तो if in case if there is any fire at any spot आपको उसको लेना है. तो being an chemical engineer आपको उसको line sizing करना है, hydraulics करना है, उसका MOC decide करना है. Those and all things are required.
देन कोई इक्विपमेंट बहुत ही क्रिटिकल होते हैं तो उस इक्विपमेंट पे आपको फिक्स्ड वाटर स्प्रे सिस्टम देना होता है कि भाई वो इक्विपमेंट मतलब बाकी कुछ फायर पे लगे ना लगे, बाकी इक्विपमेंट पर तक तो आप मैन्युअली जाके कुछ कर सकते हो, बट अगर कोई हैजार्डस है बहुत ही तो उसको आपको उसके अराउंड ही कोई ऐसे नोजल्स लगा के आपको उसके पानी छिड़कना है, तो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी. Then there are some equipments in place. So in the next slide, we are going to see what all firefighting equipments which we handle in the plant. Of course, as I said, that you have to do some hydraulic calculations because industry wants you to operate the fire water equipment at a particular pressure. तो जैसे आपका hydrant है ना, जो आपने देखा होगा कि फायर फाइटर आते हैं और हम होज लेके जाते हैं, तो that hydrant has to be operated at a particular pressure. So you have to do the hydraulic calculations, pump calculations, and so on. Okay, so these were the active firefighting measures. Means what? Fire लगा तो उस पे काम करो actively. You have also to be take care the passive firefighting measures. Passive मतलब क्या? जो उस टाइम पे काम नहीं करना है, जो ऑलरेडी इनबिल्ट है, ऐसे कोई मेजर्स मेथड्स भी आपको देखने हैं. So what are such passive firefighting measures? Fire proofing. तो अब क्या करो? आपको समझ में आ रहा है ना, कोई is there in some equipment which is very crucial for you. तो आप उस मटेरियल को, उस जो भी आप उस वेसल को ले रहे हो, उस पे एक थिक कोटिंग लगा दो, उसके सपोर्ट्स को थिक कोटिंग लगा दो कि चलो इन केस ऑफ फायर उस पे फायर है या कोई बाजू में फायर है, उसका फ्लेम आ रहा है, then because of that coating that equipment is able to withhold that flame कि उस पे कोई सपोर्ट्स, because देख कैसा है, if there is any vessel which is a tall vessel, if the supports are damaged, the vessel might collapse. So again, that is a risk. So you have to also ensure there is some passive fire measure present. Then of course there should be some fire and gas alarm and detection कि कहीं पे fire होता है, gas leak होता है, there should an alarm should be there that should go on. Correct? तो उसके लिए आपको फायर एंड गैस डिटेक्टर्स लगाने पड़ते हैं कि जो डिटेक्ट करेंगे. मैनुअल कॉल पॉइंट आपने सुना होगा, या कोई भी ऐसे डिटेक्शन इक्विपमेंट है वो आपको प्लेस करना है. फिर उसका मैपिंग स्टडी करना है कि भाई मेरे फ्लेम डिटेक्टर्स है, मेरे हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर्स है, मेरे टॉक्सिक गैस डिटेक्टर्स है, आर दे सफिशिएंट, क्या मैंने उसको करेक्ट लोकेशन पे रखा है या नहीं रखा है. एंड उसका आपको कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स बनाना होता है. इट मींस व्हाट, आपको बोलना है कि भाई ये अगर डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया तो ये अलार्म बजना चाहिए, यहाँ पे अलार्म बजना चाहिए. यहाँ पे मतलब कोई अलार्म्स आपको फील्ड में लगेंगे. सम अलार्म्स यू विल रिक्वायर्ड इन द डीसीएस, सम अलार्म्स यू विल रिक्वायर्ड इन द एफजीएस, लाइक ये सब सिस्टम्स है. तो यू शुड लाइक टेल विच अलार्म शुड गिव विच एक्शन. दैट इज बीन स्टडीड इन द कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स. Clear? We'll quickly see what are the firefighting equipment which are present in the industry. आपने सारों के नाम नहीं सुना होगा, but like you might be familiar with some of them. So the very first is hydrant. You might have seen this equipment. ये along the road भी place होता है आपका. उसमें ये जो आपको hose दिख रहा है ना यहाँ पे, या like this point, यहाँ पे आपका hose connect होता है आके, and you can just have your water directly through this. Then this is monitor. This is very similar to hydrant. इसमें खाली क्या है, अगर कोई elevated पे equipment है, उस पे आपको पानी थ्रो करना है, तो through this nozzle you can throw the water directly. So it is for high rise building or high rise equipment. Then there are some spray sprinkler nozzles. ये आपको कोई भी ऐसे बिल्डिंग में दिखाई देगा, जो अभी लेटेस्ट बिल्डिंग्स है ना, उसको कंपल्सरीली बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर ऐसे स्प्रिंकलर देने होते हैं. सो इन केस ऑफ फायर, दिस इज द रेड बल्ब यू कैन सी. तो दिस रेड बल्ब इज अ टेम्परेचर सेंसर कि अगर कोई टेम्परेचर रेज होता है, दिस बल्ब विल बर्स्ट एंड वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस. तो इससे पानी आएगा और स्प्रिंकलर की वजह से पानी ऐसे पूरा नीचे नीचे फैल जाएगा या ऊपर, whatever is the arrangement. So these are the spray sprinkler nozzles. Typically इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं और रेसिडेंशियल में भी यूज होते हैं. देन द होज रील, जैसे मैंने बोला, जो आपको लेके जाना है उस पाइप को, बेसिकली इट इज अ पाइप जो इफ यू हैव टू टेक टू दैट प्लेस एंड यू हैव टू एक्सटिंग्विश द फायर मैन्युअली. देन दिस इज अ ड्राई राइजर. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ इंडस्ट्री में आपको डायरेक्ट वाटर सप्लाई नहीं होता है अवेलेबल, आपको बहुत ऊंचे फ्लोर पे जाना है. तो व्हाट यू गिव इज यू गिव एवरी फ्लोर पे टैपिंग विच इज कॉल्ड अ लैंडिंग वाल्व. ये जैसे लैंडिंग वाल्व देते हैं हर फ्लोर पे बिल्डिंग के, और वो बिल्डिंग के उस फ्लोर के नीचे तक पानी है. तो जो भी फ्लोर पे आपका पानी, जो फ्लोर पे आपका फायर है, यू हैव टू गो टू दैट फ्लोर एंड यू हैव टू एक्सटिंग्विश दैट फायर like this by the firefighters.
Then also there are some fire extinguishers on the spot. अगर आपको फायर एक्सटिंग्विश करना है, छोटा फायर है, स्मॉल फायर है, तो वी कैन ऑलवेज गो विद दिस फायर एक्सटिंग्विशर बाय लाइक द यूज ऑफ द फायर फाइटिंग पर्सन. Clear? So these are the various firefighting equipment which we use in the industry. Now we are going to see what are the expertise required. तो अगर ये सब अभी तक के टॉपिक्स देखने के बाद, if you feel like you can be a safety engineer, you can pursue your career in this field, आपको क्या qualification लगेगा? So just quickly taking you through this. So you would be requiring a BTech or a BE in chemical or mechanical or its allied branches. You would require a 3 years graduation in the relevant field. अगर masters है तो वो plus है. There is, as I was saying, there is a separate engineering field as of now. So if you're having engineering field, that is a best thing. अगर आपके पास ये कुछ नहीं है तो आपको फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा भी चलेगा या कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोर्स चलेगा. ठीक है. स्किल्स, आपको स्किल्स क्या आने चाहिए उसके लिए? So for that you should have at least basic understanding about the process. See, safety आपको तभी करने को आएगा जब आपको वो प्रोसेस पता है, उसमें क्या हैंडल हो रहा है, क्या प्रोसेस है, कंप्रेसर है, पंप है, नहीं है. Those understanding you should have. Then you should have the information about the chemicals. क्या chemicals handle हो रहे हैं? That is the first step about your safety. Then you should have कि उसमें सेफ्टी रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज है उसका आपको ना कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर सी फायर कैसे इमरजेंसी है, आपको यू हैव टू टेक डिसीजन विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, कि भाई अगर आपको किसी ने रात को 12 बजे फोन किया कि ओके देयर इज अ फायर एट दिस प्लेस, व्हाट शुड आई डू? यू शुड नो ओके कौन सी प्लेस पे, चलो एरिया XYZ एरिया पे फायर है, तो what I have at that area, okay, I have an extinguisher. You should tell, okay, go take this extinguisher, extinguish the fire. No, you have a hydrant. Go take this hydrant, extinguish that fire. You should have that conceptual clarity. You must have hands-on experience on the hydraulic calculation and the line sizing of the various pipes. Then you should be aware of the various data sources, because as I said, there are various industrial standards which tells you the references or tells you the guidance about how to apply safety. So you should know the standard के name at least. जैसे कि अभी कुछ names I'll tell you. There is some standards called NFPA, National Fire Protection Association. Correct? Very good international standard which is used. Yeah, API, American Petroleum Institute. Again, a very good globalized standard. So such standards you should know. See, I do not expect you should know at this stage. When you go into the industry, when you'll jump into the activity, then only you will come to know about it. So at least आपको पता होना चाहिए कि भाई standards होते हैं. Okay. Then what are the career opportunities if you are doing the process safety design or the process, if you are entering into the design safety field, you would be a safety engineer in an engineering procurement and construction company, which is a short form, it is like called as EPC company. Many times they are the multinational companies, so you would get an opportunity to be a safety engineer there. You would get an opportunity to be a safety advisor or safety specialist in any of these industries. See, there are, I'll say, आप कोई लोग ये जैसे आप जिस सिटी में हो वहां पे भी आपकी बहुत सारे इंडस्ट्रीज रहेंगे, भले छोटे छोटे, बट आप छोटे छोटों को काउंट करोगे ना, द काउंट इज ह्यूज. भले आपको लगेगा हाँ ये तो इंडस्ट्री में खाली एक ही प्रोसेस इक्विपमेंट है, बट सोचो ऐसी इंडिया भर में कितने केमिकल, कितने मैन्युफैक्चरिंग, कितने प्रोसेस केमिकल्स इंडस्ट्रीज है. सी, हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेगा ही नहीं, दैट इज नॉट फॉर श्योर. लाइक दैट इज नॉट लाइक कैनॉट बी टोल्ड. हर इंडस्ट्री में आपको कोई वेल्डर लगेगा ही कि नहीं, दैट इज नॉट कंफर्म्ड. बट हर एक, आई एम सेइंग हर एक इंडस्ट्री में आपको सेफ्टी इंजीनियर लगेगा ही लगेगा. कितनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो, मिनिमम 1 to मैक्सिमम इंफिनिटी इंजीनियर्स आपको सेफ्टी के लगेंगे ही लगेंगे. Okay, so you can understand the scope about this field. You can be a safety inspector or a safety auditor. You can also be safety consultant, and you can have your consulting activities to the industry. Of course, not at a fresher level. When you take some experience, you can go or you can opt for this consultancy field. You can be a reputed member of the AHG. So ये authority having jurisdiction कौन होते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा कि IOCL में जो फायर लग गया
उसकी फायर के लिए एक अथॉरिटी बिठाई गई, एक इंक्वायरी एजेंसी बिठाई गई विच इज स्टडिंग दैट एक्टिविटी. सो वो लोग जो स्टडी करके एनालाइज करके जो आपको रिपोर्ट देंगे दैट इज ऑफ हाई वैल्यू. So if you are having you have gained some certain knowledge in this field, you can be a reputed member at this kind of department, जैसे मैं बोल सकती हूँ. Or you can be a member of the safety panel in the government and the non-government firms, which are a highly reputed of a field, because they have their responsibility to analyze, to study what are the future consequences और क्या changes कर सकते हैं. जैसे अभी we are shifting towards the hydrogen fuel. We are shifting towards the green energy. Why? Because हमने देखा pollution हो रहा है, इंडस्ट्री में safe नहीं है हाइड्रोकार्बन फ्यूल यूज करना, तो we have to find some alternative. So these and all things are been taken care by them. उसके लिए कौन से एग्जाम्स से सर्टिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे. सो द एग्जाम्स फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी विल सी फर्स्ट. So there are some boards which will give you the certification. So one is your NEBOSH, one is your IOSH. Now I want you to go and Google these things because we are running out of time. So I'll just tell you the names of the terms. So it is NEBOSH, but then it's IOSH. There is BSc. These are all global certification bodies which will tell you or which will give you some certifications. They have their own exams also. Then there is IEMA. Then there is first safety, first aid kit, first aid course. Then there is CPR course. Then there are certain government approved fire safety courses also. जैसे महाराष्ट्र में there is MSBTE के courses which gives you fire and safety, firefighting course, industrial safety course. वैसे ही हर एक state they have their different courses and any other related courses. If you want to go for the design safety courses, you have options like CCPS. You have process safety management courses or management related other courses. We have a full-fledged safety design course at our institute, Safety Hat. So if you want to do a design safety course, we can also do that. Okay. So just to tell you guys about our institute. So we have this full-fledged dedicated safety training institute, which is Safety Hat. And we have a different variety of topics topics discussed or topic trained at our place. Has anybody unmuted and want to say something? No. Okay. All right. So we have this various topics covered. So just to give a brief idea about what all topics we cover, this is a brief module, module numbering for you. Guys, I think I have lost the network. Am I back now? Can you still see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your PPT is visible. Thank you. Okay, sure. Yeah. So what I was talking about is at Safety Hat, we have different topics which we cover. So we have this 24 modules. So our entire session has been distributed into these 24 modules, wherein we cover almost all. I would never say all because there are, some changes all around going around in the industry. We have tried to cover almost all of the industrial safety topics wherein we give the students hands-on experience and hands-on case study related experiences where they actually go and do this activity. We have a plant installed, like a demo plant, wherein जहाँ पे आपको वो सारी चीजों को अप्लाई करना है, like actually measure the distance कि भाई ये इक्विपमेंट से कितना दूर रखना है मुझे या इसमें से कितना फायर का एमिशन का चांस है. So we have all those things inbuilt in us. So this is a full-fledged 120-hour course with you, which we conduct. If somebody wants to have a shorter course, just an introductory course, we also have 20 hours, 40 hours courses as well. So if anybody wants to have a further analysis or a further discussion or in-depth knowledge about this, we do also provide this safety courses. Okay, guys. So this was all about today's session. This, I hope, have given you a brief idea about how industry deals with the safety and how industry takes care about the safety of their personnel, of their equipment, of their property. So if you have any questions, please raise your queries here. We can discuss it for some time. Yes, anybody, if you have anything in you, anything queries with you, please unmute and speak.
Yes, student, please be interactive. Okay, so step up platform because madam have practical experience and madam is a design engineer. Okay, so definitely it will help to you. You can definitely you can interact and you can ask your queries. Ma'am, as we are going to become a chemical engineer, do we have to take a specialization in this course to get in this field so we can have an edge on other candidates? Yes, so that's what was my focus on because see, Jesse, we know even during our engineering, so we have done as an engineering, maybe we have done chemical engineering, and this safety has apart from chemical industry. Of course, you should have the basis of the core of the chemical engineering with you, but apart from that, we have all various different activities with us. So as I said in my like as when Mangesh was introducing me, we have done various things in electrical hazardous area classification. So you have to have also some things about the electrical safety. You also have to have something about detection study, about the proofing study, about the line sizing, vessel sizing, and all. So it's a good thing if you want to stand out of the crowd, out of the people which with whom you are going to compete. If you are having any additional certification with you about safety, and particular talking about safety, it will be the industry would happily take you, because otherwise what will happen, if you go as a fresher, the industry have to teach you everything from the start. So people normally in general employer avoid spending more of time in training giving. So if you have already knowing the concept, it would be helpful for the employer, and you can be onboarded as quickly as possible. So definitely I would say this is a thing which requires some extra courses and all. And the list which I have provided was for that only. Like if you want to do something extra, there are various boards. See, we are not aware of. Even I was not aware about these things for so many years. But when I jump into this field after my engineering, I got to know, like there are n number of boards which give these certifications. So it's up to you, like which thing you want to which way you want to go for. As I said, like there is one board, NEBOSH, NEBOSH, which is a UK government body, and I have recently cleared the international diploma of that body. So I have felt a very huge difference about what we have learned and what we should go and learn. So it's an ongoing process. You have to learn forever. Like it's never like मैंने ये कर लिया तो मेरा हो गया. No, there are many changes every time happening in the industry. So you have to always keep on learning things. So that's it. Ma'am, I had another question. Yeah. Ma'am, how does a procedure engineer differs from a safety engineer? So if a process engineer, or I would say a person has worked in the production or a process industry, has a hands-on experience or hands-on knowledge about what the process is all about. तो इसका मतलब उसको उसके सारे ना hazards भी पता है. So if that person takes up any safety related course or if he grasps some knowledge about that safety activities which are happening in the industry, that person can be a very suitable candidate for being a safety engineer. Because जैसे मैंने बोला, आपको safety करने के लिए पहले आपको उसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए. एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ प्रोसेस इंजीनियर, यू ऑलरेडी नो कि भाई ये वाल्व बंद करने से मुझे पीछे क्या इम्पैक्ट करने वाला है, या इसमें से कौन सा फ्लूइड फ्लो होने वाला है, या उस वेसल का कंटेंट क्या है, उसमें क्या है, उसका कितना कैपेसिटी है, ये प्रोसेस इंजीनियर को अच्छे से पता है. सो इफ दैट पर्सन takes up any safety course, he can easily or very well can jump into the safety field. Yeah. Yes. Anything else, Ma'am, guys? yes, Yeah. sir. Next question. Ma'am, as I am a second year student, my second year is just started. And ma'am, so should I start learning safety from now, or just wait to complete my concept and then start this studies? Okay. So it is typical
आई वुड से टिपिकल माइंडसेट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे टाइम पे था, आई वुड से कि भाई इंटरव्यू का आज है डेट, तो मैं 1 महीने पहले उसको स्टडी करके आई विल गो एंड क्रैक द इंटरव्यू एंड आई विल डू थिंग्स। सी, आपको खाली सेफ्टी नहीं करना है, भले मेरा पोर्टफोलियो सेफ्टी में है, मेरा बैकग्राउंड सेफ्टी का है, आई वुड नेवर से कि ओके चलो अभी तुमको भाई सेफ्टी सेफ्टी ही करना है। नो, यू शुड हैव एवरीथिंग नोन टू यू। तो आपको जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है, सपोज यू हैव अ वेकेशन इन दिस मंथ, दिस लाइक आफ्टर दिस सेमेस्टर यू हैव अ वेकेशन ईयर, और you want to do it along with your studies as you preferred, do it, take the activities one by one. So since this time you're taking safety as an activity, do it. Next time if you're taking say any courses for your personality development, say GDs, PDs, या जो भी कर रहे हो, take it at that point. So throughout your diploma or throughout your degree, you should be like, when you are actually getting passed out, when you're actually completing your 4th year, you should be a package. Like company should को ये नहीं होना चाहिए अरे भाई इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो नहीं आता. You should be ready with a package person for that industry. You should know everything. You should know something about safety design. You should know something about the piping engineering, something about process design, vessels और जो भी है. So I would say it's up to you and your interest. If you want to do it now, it's okay. If you want to do it later, it's okay. But ये जो टाइम अगर आप अभी सेफ्टी नहीं कर रहे हो ना, एटलीस्ट कुछ दूसरा एक्टिविटी करो. भले आपको सेल्फ लर्निंग करना है, सेल्फ लर्निंग करो. देयर आर आल्सो वेरियस फ्री कोर्सेज अवेलेबल इन द इंटरनेट और लाइक इन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स. So at least do that and take the safety course later on. So it should be an ongoing process, and it should be a process which should benefit you. तो कुछ भी करो जो आपको आगे चल के बेनिफिट होता है आपके 4 years के टोटल इसके बाद. ठीक है. बट या इन टर्म्स ऑफ नॉलेज अगर आप बोलो कि आप 2nd ईयर में आपको समझ में आएगा क्या सेफ्टी का, तो आई वुड से यस, समझ में तो आएगा, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है ना वो केमिकल इंजीनियरिंग का है. आपको भी सब सब्जेक्ट्स रहेंगे, हीट एंड मटेरियल बैलेंस रहेगा, आपको फ्लो डायनामिक्स रहेगा, जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, दोज आर रिलेटिव टॉपिक्स. सो इफ यू फील कि आपको पैरेलली करना है तो यू कैन डू पैरेलली. एल्स इफ यू वांट नहीं पहले मेरे वो सब्जेक्ट्स खत्म होने चाहिए, देन आई वांट टू डू, it's totally up to you. But yeah, we can very well do, because I had a batch in the last year. I had a batch, you won't believe, that batch was having students from IT industry. Zero knowledge about chemical process and chemical things. They were from IT, like information technology field, like a background was of that, and they were still interested for that. They were looking for that because उनको था कि भाई हमको इतने ओपनिंग्स आ रहे ना कि भाई सेफ्टी के लिए ऑपरेटर चाहिए, ऑफिसर चाहिए. We want to switch our careers into that, and they had learned it also well. So you can at any point or any stage you can definitely opt for this course. Yeah. Anything else, guys? Thank you, ma'am. These were all my questions. Yeah. Thank you. Okay. Anybody else wants to add up or wants to ask anything? Okay. Mangesh sir and Naina ma'am, if students want to discuss anything even after this workshop, you can anyway take their queries and you can anytime come to me. If you have, like, students have anything, I'll be happily solving their queries. So we can also do that. Sure, ma'am. Actually, I think you have given your numbers and email ID also. Correct. So I think student can interact with via mail or phone number if they are interested. Correct. Or they have any query. Student, actually, you can ask about your career. Definitely, madam have already told in her PPT that career opportunities, but you can again ask about, because madam have definitely, madam is working and madam is running her training institute also. Okay, so that's why it's a golden opportunity. So your whatever your query you can ask. ओके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में कि व्हाट नेक्स्ट, क्या करियर अपॉर्चुनिटी होगी. हम ऑलवेज प्रोडक्शन प्रोसेस साइड भी सोचते हैं, बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड
है ना, फॉर केमिकल इंजीनियर। ओके, क्योंकि मैडम ने जैसे कहा वैसे हर एक इंडस्ट्री में सेफ्टी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होना ही है, इसके अलावा इंडस्ट्री रन नहीं होगी। Okay, so I think no more questions from student side. So we will move towards vote of thanks session. Yeah, sure. Yes. On behalf, thank you, madam. On behalf of all students, staffs, and from chemical engineering department, I'm glad to express my vote of thanks. Very special thank you, ma'am, for accepting our invitation and for being here with us today. In spite of it's Sunday, you have spent time for us. So it's very thank you, ma'am, for this. And definitely this today's session is very much interactive also and informative and very important for interview aspect also. So definitely it's a full of knowledge. Okay, so and thank you very much, ma'am, once again. Thank you very much for joining with us and in enlighten our students. Thank you very much, and thank you all staff members. Many senior faculties also join today's session, and thank you students. So that again, anyone want to some or say something, you can definitely you can interact. Okay, if no one have any queries or any point to say, then now I call today's session is ends here. Okay, so you all can leave now. Okay, thank you very much, ma'am. Yes, ma'am, thank you very much once again. Thank you. Thank you, madam. Yeah, it's my pleasure to have to deliver a session to such an interactive crowd. I really felt encouraging thing, because when somebody asks queries or somebody put up their words, so it gives a energy for us also to deliver more and to share more. So yeah, so very good of a crowd we had today. So thank you so much for organizing this. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so today's session is ends here. All students and faculties can leave now. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. See you soon. I would Yes. like to say, madam, a safety ever, accident never. All the students, give safety a little time. Safety will give you lifetime. Follow all the instructions given by madam. You can make your career in a better way. Thank you, madam, for guiding our students. कोई भी इंडस्ट्री सेफ्टी इंजीनियर के बिना बिल्कुल नहीं चल सकती. That is very true. Thank you very much for guiding our students and enlightening them. Thank you, ma'am. Nice meeting you, madam. Yeah, same here. Same here. Definitely. Chalo. Bye-bye. See you, everybody. Bye, ma'am. Okay, chalo. Okay, bye bye.